तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं Redmi A4 5G स्मार्टफोन के अंदर। ये एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको 8,500 रुपये देखने को मिल जाती है और इस प्राइस पॉइंट पे आपको 4 GB की रैम एंड 64 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और साथ ही इसका एक और वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाता है। 2 कलर ऑप्शन में आपको ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। बॉक्स के पीछे कुछ मेन फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि इसके अंदर आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 4S Gen 2 वाला प्रोसेसर, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से निकाल के देता है। यहाँ पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। इसके अंदर काफी बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। और मैंने इसका हायर वेरिएंट बाय किया है जो आता है 4 GB की रैम के साथ एंड 128 GB स्टोरेज इसके अंदर देखने को मिल जाती है और इसकी प्राइसिंग आपको ऑलमोस्ट 9,500 देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम वही टेस्ट करने वाले हैं कि यहाँ पे प्राइस के हिसाब से हमको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है इस वाले स्मार्टफोन में वो कैसी देखने को मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन है ये ग्लास बैक के साथ आपको देखने को मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट पे भी। और साथ ही इसके अंदर हमको हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है, जो कि अभी फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन में से निकाल रही है कंपनी, लेकिन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो फोन के फीचर्स के बारे में आपको यहाँ पे ज्यादा मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू ऑलरेडी करके रखा है। तो आप लोग चैनल पे जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। तो फटाफट से चलते हैं हम अपने गेमिंग टेस्ट की तरफ। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यार वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो फटाफट से चलते हैं हम अपने गेमिंग टेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम इसके अंदर टेस्ट करने वाले हैं फ्री फायर मैक्स गेम को। तो फ्रेंड्स फोन का डिस्प्ले गेमिंग के लिए काफी ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे आपको काफी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो बड़े डिस्प्ले में गेमिंग का अलग ही मजा होता है गाइस। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है ये आपको HD+ ही देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पे बढ़िया बात है। आगे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा इस वाले स्मार्टफोन में वो भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आगे तक बने रहे। और यहाँ पे काफी सारे लोग पूछते हैं गेमिंग मोड के बारे में, तो हाँ इसके अंदर गेमिंग मोड भी है, प्लस यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर भी देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग मोड का आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अंदर आपको गेमिंग मोड प्लस वॉइस चेंजर दोनों ही देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ये भी बढ़िया बात हो जाती है। अभी फाइनली आपको पहले तो यहाँ पे मैं ग्राफिक सेटिंग चेकआउट करवाऊंगा कि हम किस ग्राफिक के ऊपर इसके अंदर गेम प्लेइंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ग्राफिक है वो हमने फुल मैक्स के ऊपर यहाँ पे सेट कर दिया है। और फ्रेंड्स इसी ग्राफिक के ऊपर हम इसके अंदर गेम प्लेइंग करने वाले हैं, तो जो परफॉर्मेंस है वो कैसी देखने को मिलेगी उसका अंदाजा हमको इस वीडियो में लग जाने वाला है। और फ्रेंड्स परफॉर्मेंस के साथ साथ हम इसकी प्राइस को भी ध्यान में रखेंगे, तो प्राइस को ध्यान में रखते हुए इसकी परफॉर्मेंस हम टेस्ट करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसके अंदर CS मैच को प्ले करके देखने वाले हैं कि हमको CS के अंदर कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। उसके बाद हम फुल मैप भी इसके अंदर प्ले करने वाले हैं, तो आप लोग उसके लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। और फ्रेंड्स हम अपने गेमिंग टेस्ट को एक और लेवल ऊपर तक लेके जाते हैं। इसके अंदर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन करके खेलने वाले हैं, तो फटाफट से हम इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर है यहाँ पे है, और फटाफट से इसको हम कर लेते हैं ऑन। और हमारा जो मैच है उसको हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा असली परफॉर्मेंस इसके अंदर टेस्ट होने वाला है, तो फटाफट से हम गेम को है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखते हैं हमको परफॉर्मेंस है वो कैसे देखने को मिलती है। Takedown. Help me! Good job. Double takedown. Good job. Thanks. Triple takedown.
First doom. Triple takedown. First doom. Triple takedown. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पहली मैच है वो फिनिश हो चुकी है और परफॉर्मेंस जो निकाल के दी है इस वाले स्मार्टफोन ने, ये मेरे को कहीं पे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमको इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन ने मैक्स ग्राफिक के ऊपर भी काफी अच्छी तरीके से गेम को हैंडल किया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी हमने यहाँ पे ऑन ही कर रखा था। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आप सभी को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यहाँ पे CS मैच ज्यादा प्ले करते हो तो अल्ट्रा ग्राफिक के ऊपर आप लोग खेल सकते हो। और अभी स्टार्ट कर लेते हैं इस वाले स्मार्टफोन में एक फुल मैप मैच। और फुल मैप के अंदर भी हम सेम सेटिंग के ऊपर यहाँ पे गेम प्लेइंग करेंगे। जो ग्राफिक है वो हम जैसे मैक्स पे किया था वही हम यहाँ पे भी सेट करके खेलेंगे। आप लोगों को फिर से एक बार मैं यहाँ पे चेकआउट करवा देता हूँ। तो ग्राफिक है वो मैक्स के ऊपर ही सेट कर रखी है, साथ ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी हम ऑन ही रखेंगे। और यहाँ पे मैं ज्यादातर आपको फाइट सीन ही दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारी मैच को। Double takedown. Triple takedown. Quadra takedown. Enta takedown. Unstoppable. Rampage! Takedown spree! Takedown spree! Takedown spree!
Stay alert. Got a gun! Triple takedown. Takedown. Unstoppable. Rampage. Takedown spree. Takedown. Takedown spree! Takedown spree! Team wipeout! Takedown spree! Takedown spree! Takedown spree! Wipeout. तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने 2 मैच प्ले किया है। एक सोलो मैच प्ले किया था, अभी सोलो वर्सेस स्क्वाड यहाँ पे मैंने प्ले किया है। और जो परफॉर्मेंस इसके अंदर निकाल के दी है इस वाले स्मार्टफोन ने, वो प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सोलो मैच के अंदर बिल्कुल भी इशू देखने को नहीं मिला, लेकिन सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर जब बंदे ज्यादा आ जाते हैं आसपास, तब थोड़ा बहुत ये फोन लैग होता है, फिर अपने आप स्टेबल भी हो जाता है। तो उतना लैग देखने को नहीं मिला। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत लैग ये फोन करता है, वो भी मैक्स ग्राफिक के ऊपर। तो अगर आप सभी लोग फुल मैप के अंदर ज्यादा
ज़्यादा गेम खेलते हो तो यहाँ पे आप ग्राफिक सेटिंग है वो स्टैंडर्ड पे करके खेल सकते हो, या फिर स्मूथ के अंदर आप लोग करके खेले, आपको और भी अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और बात करें हीटिंग के बारे में तो यहाँ पे ये फोन उतना ज़्यादा हीट नहीं हुआ है, थोड़ा पीछे के साइड मेरे को वार्म फील हो रहा है, तो फोन हीट को भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप लोग चैनल के ऊपर जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, और कोई भी सवाल है इस वाले स्मार्टफोन को लेके तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से पूछ सकते हो, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर से दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू स्मार्टफोन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।